Assalamu alaikum students. So this is our last lecture and this is about uh, tradition and individual talent essay by TS Eliot, and this is part 4. And this now we'll talk about the second section, and in this particular session, and then in this particular session, at the end of this session you can also give your presentation. When I finish this one, the finish the slides, so you can also give your presentation. So let's talk about the second section. And remember, I've already sent you the handouts, and I would like all of you to read all the pages. There are 7 pages, I think, which you have to read. So here, T.S. Eliot is talking about impersonal theory of poetry. What T.S. Eliot says, he says that honest criticism and sensitive appreciation is directed upon the poetry and not the poet. Once again, honest criticism and sensitive appreciation is done upon the poetry, not the poet. लोग poetry पर जो भी criticism करते हैं वो करते हैं poet पर नहीं. So poetry is devoid of poet's personality, and that's why poetry should be devoid. Devoid means it should not have the poet's personality. If you want to judge any piece of work, or if you want anyone to judge any piece of work, so we should devoid, or there should not be any relation, or there should not be anything mentioned related to the poet or related to the writer. Only his or her work should be judged. So the personality of the poet is merely a medium through which the poetry is created. The personality of the poetry is only a medium by which the poetry is created. So it is the poetry which should get the attention. But unfortunately, in many cases, poet gets attention, not his work or his poetry. So Eliot says it is poetry that should get attention. Eliot says poetry is a living whole of all the poetry that has ever been written. A poem is related to other poems written by other authors, and the importance of this relationship should not be ignored. Relationship of poet and poem. So the poet's mind is like a catalyst and the poetic process is like a chemical reaction. पोएट का जो माइंड है वो कैटलिस्ट की तरह है, और जो पोएटिक प्रोसेस है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है. So the elements of experience which enter, once again, remember here, Eliot is saying that the mature poet differs from the immature by being a more perfected medium in which different feelings can freely enter into different combinations. So poets में mature or immature poets होते हैं. So the poet's mind is like a catalyst and the poetic process is like a chemical reaction. Then he gives example of different types of chemicals and different type of other things you can find in the notes. The elements of experience which enter the poet's mind, or which enter poet's mind, which is the catalyst, जिसको उसने catalyst कहा है, are of two kinds. वो दो तरह के होते हैं. They are emotions and feelings. Once again, the elements of experience which enter a poet's mind are of two kinds. और उसी elements of experience को उसने कहा है like catalyst. So these are emotions and feelings. So poetry may be created through the combination of feelings alone or emotions alone, or out of the combination of both. But Eliot does not really explain the nature of emotion, of feeling, though he distinguishes between them. दोनों के दरमियान differentiate तो किया, लेकिन उन्होंने मजीद explain नहीं किया. Eliot holds that feelings are inherent for the writer in certain words or images. So feelings and their appropriate images are stored up in the poet's mind to be used when the correct moments come. जब सही वक्त आ जाता है तो वो उसको इस्तेमाल करता है, उस feelings को पहले जमा कर लेता है, उसके बाद उसका use करता है. So he says that the poet's mind is a receptacle
which stores up the various feelings and emotions. वो रिसीव करता है, क्या करता है, इट स्टोर्स वेरियस फीलिंग्स एंड इमोशंस, मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स और इमोशंस को अपने अंदर जमा करता है. So a poet's mind is a receptacle which stores of various feelings and emotions, phrases and images. So these things remain there until the elements which are needed for the cohesion of a new compound, and they all are present together. तो दिस इज पोएट का जो माइंड है वो स्टोरेज के तौर पे भी काम होता है, करता है, जहाँ पे चीज़ें आके स्टोर कर रही होती है, उसके बाद वो टाइम सही वक्त पर उसको निकालता है और उसको पेश करता है आगे. Eliot says it is not the greatness or the Yes. intensity of the emotions that make great poetry. ये बहुत अहम चीज़ है जिसको मैं चाहूँगा कि आप लोग तवज्जो दें. Eliot says it is not the greatness or the intensity of the emotions that make great poetry. और Wordsworth ने ही कहा था कि poetry is a spontaneous or full of powerful feeling. But Eliot says it is not the greatness or the intensity of the emotions that make great poetry. It is the intensity of the artistic process, the pressure under which the combination of the elements takes place that matters. तो ये असल में अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द आर्टिस्टिक प्रोसेस, द प्रेशर अंडर विच द कॉम्बिनेशन, वो आर्टिस्टिक प्रोसेस क्या कहलाता है, द प्रेशर अंडर विच द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टेक्स प्लेस दैट मैटर्स. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसम्यूटिंग इमोशन अलाउज ग्रेट वेराइटी, तो वो जो है उससे काफ़ी वेराइटी सामने आती है. And therefore, poetic intensity has nothing to do with the intensity of personal emotions. This is very important to remember. याद रखने वाली चीज़ है कि poetic intensity has nothing to do. It has nothing to do with the intensity of personal emotions. It is the intensity under which the poetic process takes place and which gives rise to great poetry. It is the intensity under which the poetic process takes place, और यही जो चीज़ है वो great poetry को produce करती है. So the poet has no personality to express. This is something that you should remember. The poet has no personality to express. He is only a medium in which impressions and experiences combine in peculiar and unexpected ways. There may be impressions and experiences which are important to the man in a personal sense, but these may not find any place in his poetry. हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी जो इंसानों के लिए तो अच्छी हो, लेकिन शायरी में उसका कोई अमल दखल ना हो. In the same way, there may be experiences which become important in his poetry, negligible as far as the man and his personality is concerned. और वो चीज़ पोइट्री में तो बहुत अहमियत की हामिल हो, लेकिन उसकी अपनी असल ज़िंदगी में उसकी कोई हैसियत ना हो. So the personal emotions of a poet do not make him interesting and remarkable. What Eliot means is that the critic has to look at poetry as it is. It is the artistic emotion as expressed in the poem that makes it interesting. तो poem में जो artistic emotion होता है वो poem को interesting बनाता है. तो जो समझने वाली बात ये है वो ये कि poet has no personality to express. It is his artistic emotion that makes his poems great. So personal emotions have no place in poetry, according to T.S. Eliot. Now, what is the business of a poet? एक शायर का काम क्या होता है? The business of the poet is not to find new emotions, but to use the ordinary ones, and in working them up into poetry to express feelings which are not in the actual emotions at all. तो उसका काम ये नहीं कि नए emotions को find out करे, बल्कि जो ordinary है उनको इस अंदाज से पेश करे कि लगे वाकई किसी शायर ने काम किया है. So a poet has to do he has to present these emotions with a newer significance in a different way. Here, Eliot rejects the theory of poetry given by Wordsworth. He rejects
Wordsworth's theory of poetry. एलियट क्या कहता सर है? आर्टिस्टिक इमोशंस को एक्सप्लेन करेंगे दोबारा? Artistic emotion means, artistic means when, as I told you, that there are many things which are related to our personal life, but these things cannot be the content, or these things cannot be taken in poetry. Similarly there are many things which are very important for writing any piece of work. Poetry means any piece of work, whether you are writing novel और कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो उसमें उसकी जरूरत हो सकती है जो आपकी पर्सनल लाइफ में जिसकी कोई हैसियत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट बी वेरी गुड, एक लैंग्वेज की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वी मस्ट बी वेरी गुड एट ग्रामर. ठीक है, व्हेन वी राइट समथिंग वी मस्ट बी वेरी गुड एट ग्रामर, वी मस्ट नो अबाउट figure of speeches, and we know figure of speech, we must know about poetic diction. रियल लाइफ में इसका कोई अमल दखल नहीं है. रियल लाइफ में आप कुछ भी बोल देंगे वो चल जाएगा, बट व्हेन यू राइट समथिंग द पीपल रीड इट, and when they read it, so they should be moved. How can they move, how can they have feeling when you don't write according to their caliber and according to their taste? वो इस तरह से कि artistic emotion means you will write, those emotions will be related to your art, those emotions will be related to your domain. For example, if you are a poet, so you will have emotions from that point of view. जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि क्रिकेटर्स बहुत से ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि क्रिकेटर्स की या आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती. ठीक है, सो दे डोंट फॉलो एनी such thing that there is a tension between countries, so they don't say, they say we are artists and we are sportsmen, so they have no boundaries, so we don't want any other thing to come in. But there are countries, they interfere in different things. जैसे हमारे पड़ोसी मालिक ने जो है वो क्रिकेटर्स पर पाबंदी लगा दी कि तुम ये जाओगे नहीं, यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलोगे. लेकिन जब हमारा और उनका मैच किसी और जगह पे, किसी और क्या कहते हैं टूर्नामेंट में होता है, तो वो उनको मजबूरन खेलना पड़ता है. ठीक है, लेकिन जहाँ पर उनके पास इख्तियारात है, जैसे सीरीज एक दूसरे की होती है, वहाँ पर वो नहीं खेलते. पाकिस्तान दावत देता है, वहाँ यहाँ नहीं आता, अपने मुल्क में आने नहीं देता, और मतलब बहुत सारे मसाइल हैं. तो एक्चुअली artistic emotion means when you have emotions from that point of view, from artistic point of view, from your art point of view, not from your personal point of view. And Wordsworth, that's why he rejects Wordsworth's theory of poetry, in which he says poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling. So here he says that it's not a spontaneous overflow of powerful feeling. Of course, we have feelings, but not that something that we should blindly follow. So there is only a concentration of a number of experiences, and from this concentration results a new thing. तो वो कहता है क्या कहता है एलियट के there is neither emotion nor tranquility in the poetic process, जिसको वर्ड्सवर्थ कहता है कि there is emotion and tranquility. एलियट says there is only a concentration होना चाहिए of a number of experiences. जो भी experiences आपके पास है उन पर concentration होना चाहिए. So this is what he says, artistic emotions. And Eliot does not say that the whole poetic process is a passive one. ये कोई passive process नहीं है, active है ये. वाकई आपने concentration बंदा active होके कर सकता है, passive बंदा concentration थोड़ी कर सकता है. Yes. What he says about a poet, he says that a good poet knows when and where he should be conscious, whereas a bad poet, where the poet is conscious, good poet knows where a good poet knows when and where he should be conscious, whereas a bad poet is conscious where he should be unconscious. A good poet knows when and where he should be conscious. According to Eliot, अच्छा शायर होगा, राइटर होगा, उसको पता है कहाँ पे कॉन्शियस होना है, कहाँ पे नहीं. Whereas a bad poet is conscious where he should be unconscious. जहाँ पे उसे conscious होना होगा वहाँ पे unconscious हो जाता है, and unconscious where he ought to be conscious. So these errors make him personal. तो ये जो errors है ये इसको personal बना देते हैं, according to Eliot. Then what is poetry? Eliot says that poetry is not a turning loose of emotion, but it is an escape from emotion. Wordsworth says it is a turning loose of emotion. Wordsworth says that poetry is a spontaneous overflow of powerful feeling, but he says no,
It is an escape from feelings. It is an escape from emotion. So it is not a spontaneous or powerful feeling, but it is an escape from emotion. Eliot says it is not the expression of personality, but it is an escape from personality. पर उसके बाद एलियट ये भी कहता है कि only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things. जिनके पास जिनकी पर्सनैलिटी और इमोशंस है वही जानते हैं कि ये क्या है escape from emotion and escape from personality. So what is poetry according to Eliot? Poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. So Eliot is not denying personality to the poet. वो poet की personality का इनकार नहीं कर रहा. Sorry. So he's not denying personality to the poet. Eliot means that poetry is the universalization of the particular. Universal appeal, it has universal appeal. So the personal emotion of the poet is to be depersonalized. जो personal emotions है शायर के उसको depersonalize करना होगा and make into something of wider significance. When it becomes depersonalized, so it will have wider significance. So what matters is how the personal emotions are transmuted into an impersonal work of art. For this, a poet needs tradition. और किस तरह से उन personal emotions को वो transmute करके change करके impersonal work of art में लेके जाएगा उसके लिए शायर को tradition की जरूरत होगी. At the end, Eliot says that the essay with of course the emotion of a work of art or of a piece of art or work of art is impersonal artistic emotion. The poet needs to surrender himself completely to the work which he has to do if he is to reach this impersonality. उसको अपनी अना से बाहर आना होगा. He cannot be conscious of what is to be done only if he is aware of the living tradition. The fact that the past lives on in the present and that the present modifies the past. So they both have very strong link, which according to Eliot, a poet, a writer has to understand. And this is something he can understand with the help of tradition. So that's all. If you have any question, you can ask. और अभी इसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन जो बकिया वो आप मुझे काइंडली सेंड करें. सर बस अब ये सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, हमें यहीं तक के लिए फाइनल के लिए प्रिपेयर करना है खुद को. जी एक्चुअली एक दो तो स्किप भी करवाए ना क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत लेंदी था तो वो स्किप करवा दिए. बस ये इतना काफ़ी है. ओके सर, सही है. मतलब सर हर जो आप जितने जितने आपने क्रिटिक्स बताया उस सब में से एक एक क्वेश्चन होगा. जी वो आपको बताया ना कि पॉलिटिक्स जो है उस वो अब नहीं आपसे पूछा जाएगा. पॉलिटिक्स से कुछ नहीं आएगा बिकॉज वी हैव कवर्ड पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल एंड वी हैव आल्सो कवर्ड सेकंड कौन सा था सिडनी. वी हैव कवर्ड एरिस्टोटल इन सिडनी. आफ्टर दैट वी हैव डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. और कौन थे? यस डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. और सर उसके बाद आपने दो और पढ़ाए सर, नाम उनके. Matthew Arnold हम्म and और कौन है? 6 पढ़ाए ना टोटल मैंने. मैथ्यू आर्नल्ड, डॉक्टर जॉनसन, TS Eliot. These are 3. One more. एक और था मेरा ख्याल से.
Sir, this one is too difficult to understand as his poetries are difficult. T.S. Eliot is always difficult because he's a modern writer and modern. T.S. Eliot ने एक दफा कहा था कि my job is to write and it is critics' job to interpret. So someone asked that why are you so difficult? So he says my job is to write. मेरा काम लिखना है और उसको समझना जो है वो critics का काम है, मतलब वो उसको समझाए, interpretation करे इसकी. So he is a 20th century writer and he's always complex and difficult. But Sir, when we understand him, so we realize that what he's talking about. sir, even he confused us with his words नो एक्चुअली इसमें regarding देखिए, poetry. अब एकदम तो नहीं आपको समझ में आएगा ना, थोड़ा सा आप लोगों की मेहनत, आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, थोड़ा आपको ना खुद से भी एफर्ट्स करनी होंगी. खुद से एफर्ट्स का मतलब ये है कि आप लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है. फैसिलिटेट में ये होता है कि आपको चीज़ें बताई जा रही है, आपको गाइडलाइंस दी जा रही है, उनको आप फॉलो करें ना. जैसे आपको मैंने हैंड आउट बताया, जिन की बुक्स बताई उनको लेना था आपको, और इस तरह से उन चीज़ों को भी आप साथ साथ पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपर्ली. आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन अक्सरियत ऐसी है कि मेरा नहीं ख्याल है कोई ख़ास पढ़ते हो, तो ज़ाहिर है फिर मुश्किल तो पेश आएगी. ये लिटरेचर है, असल में अदब है. लिटरेचर तो अमूमन जो है ना मुश्किल ही होती है. तो मतलब उससे मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि अब जो भी अक्सर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका बैकग्राउंड लिटरेरी होता नहीं है. तो जिसका लिटरेरी बैकग्राउंड होगा ना तो उसके लिए थोड़ी आसानी होगी, फिर पढ़ना बहुत पड़ता है इसमें. Sir, the fourth one was William Wordsworth. हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ ना, एक मिस हो गया हमसे. ये चार आपके पास होंगे इन द फाइनल एग्जाम्स, राइट. नंबर 1 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, नंबर 2 विलियम वर्ड्सवर्थ, नंबर 3 मैथ्यू आर्नल्ड, एंड नंबर 4 टी.एस. एलियट. एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स. First one belongs to new classical era, and the next one Wordsworth belongs to romantic Romantic era. movement, yeah, romantic era, romantic movement, romanticism. And the next after that we have Matthew Arnold, who belongs to Victorian age. Victorian age, and T.S. Eliot belongs to modern age. Modern. So these are four writers, and they are covering all these four important ages. और इससे पहले जो हमने पढ़ा था एरिस्टोटल, तो वो तो बिगनर था, ठीक है. एंड वी हैव टू स्टडी एरिस्टोटल व्हेन वी स्टार्ट क्रिटिसिज्म, स्पेशली लिटरेरी क्रिटिसिज्म. उसके बाद हमने जो पढ़ा था सिडनी को, ही बिलोंग्स टू रेनेसां पीरियड. तो वो तो हम कवर कर चुके हैं इन असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन, एंड दीज फॉर वी हैव टू डू इन द एग्जाम्स. सर एक रिक्वेस्ट थी सर, आप अगर हमें मिड के नंबर बता देते सर, हमें अपनी प्रोग्रेस पता चलती. क्योंकि सर आपने सर, मैं फर्स्ट टाइम बता रही हमारी हूँ. चेकिंग की है सर, तो हमें पता चलता कि किस तरह से हमने कितने गेट किए, क्योंकि सर सबको पता है उन्होंने मिड का पेपर कैसे दिया है. तो सर मजीद हमें कितनी प्रोग्रेस किस तरह से करनी है उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता अगर आप सर नंबर बता देते. हाँ, आप लोग इस हवाले से बेफिक्र रहें, इन सब को एक साथ टोटल करके दूंगा. हो सकता है वो जो आपकी जो आपने जो पेपर दिया है मिड टर्म का, हो सकता है उसमें कुछ कमी बेशी रह गई हो, जो आप मैं जब आपका फाइनल पेपर मेरे हाथ में आएगा तो मैं उसको देखकर उसमें आगे पीछे कर सकता हूँ. हो सकता है कि आपके इसमें कम मार्क्स हो, मैं उस पर ऐड कर सकता हूँ. अगर अभी बता दूंगा तो लॉक हो जाएगा, ठीक है. तो उसको आप ओके सर, नो प्रॉब्लम. हाँ, उसके लिए आप इत्मीनान रखें. इंशाल्लाह किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होगी, आप लोगों के साथ अच्छा, मतलब ये कि आप लोगों के साथ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दिस. क्योंकि अगर हम अभी बता देंगे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बता दूंगा तो उससे क्या होगा, फिर हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना. क्योंकि अगर किसी के एक के स्टूडेंट के बढ़ा दिया तो चार और आ जाएंगे, सर उनका आपने बढ़ा दिया, हमारा क्या कसूर था. वो इस तरह की बातें करते हैं. कभी कोई 19-20 हो जाए ना, तो उसमें हम फंस जाते हैं. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. Excuse me. डोंट वरी अबाउट दिस. यस. Sir, the students are waiting to give their presentations. So any other no question about this? तो मैंने आपको बता दिया कि these are the four writers and you have these four will be covered in the exams. और exams का मैंने बताया था कि there is a great possibility that it will be physical, ठीक है. अब ये अगले महीने डिपेंड करेगा कि सूरत हाल क्या है, लेकिन अभी हम 50-50 पर जा रहे हैं. तो आप लोगों ने अपने आप को फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है ना तैयारी करनी है ना, कि हम ऑनलाइन के उस पर करें और बाद में अचानक पता चले कि फिजिकली बुला रहे. देखें, फिजिकल के ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों को बुलवाया जाए एक ही क्लास को और पूरे यूनिवर्सिटी 2 की जगह 4 रूम से बिठाया जाए विद डिस्टेंस, ठीक है. तो इस तरह हो सकता है. तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने तैयारी फिजिकल के एतबार से करनी है. वो अलग बात है अगर एट दी 11th आवर कुछ ऐसा हो जाए कि ऑनलाइन का कह दिया जाए, वो अलग बात है. बट जो अभी तक मुझे भी पता चला वही है कि फिजिकल ही होंगे जब भी ये होंगे, ठीक है. ओके, नो क्वेश्चन. Shall I start the students in a presentation? So right now I have got the presentation of Sunil Kumar. Sunil Kumar, are you present?
Sunil Kumar. Yes, sir. So I'm opening your presentation and start. Start, please. Yes, Mr. Sunil Kumar, start. Time. We don't have much time. हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है. Voice not coming. Taking time, my dear. Sir, Mr. Sunil Kumar. I think is no. Yes, Sunil Kumar. You, I can see your name. You here, but you're not saying anything. The next one is sir, me. It's me. what's your Shaista. name? What's your name? Sir, Shaista. शाइस्ता. क्या टॉपिक क्या आपका? नेम ऑफ द टॉपिक. नेम ऑफ द Sir, new टॉपिक. classical age. ओके, आई एम प्लेइंग यू वन. आपका ये प्ले कर रहा हूँ. स्टार्ट. No, with a one word. स्टार्ट प्लीज. Sir, should I start? यस यस, स्टार्ट. Okay, the new classical age. The new classical age, known as 18th century English literature, has been called the new classical age, Augustan age, and the age of reason. The term the Augustan age comes from the self characters. यस, कैरी ऑन. Okay. Sir, characters पढ़ूं? पढ़े मतलब नहीं. समझाऊं? जी जी. Okay. Characters. The new classical literature is characterized by the order, accuracy, and the structure. Is direct opposition to the Renaissance attitudes, where man was seen as the basically good. The new classical writers man as the intensely fluid. The implies the restraint, self-control, and the common sense. This was the time when conservatism flourished in both politics and literature. Sir, next. यस, कैरी ऑन. Sir, I have done. ये भी हो Sir, गया. I have done characters. कैरेक्टर्स नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. Yes, sir. अब इसका बताएं. कैन यू सी द स्लाइड न्यू क्लासिसिज्म? Yes, sir. ये दोबारा यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया. म्यूजिक का बताएं. न्यू क्लासिकल म्यूजिक कहाँ से आ गया? सर, आवाज नहीं आ रही. इसका बताते हैं, जो स्लाइड आपके सामने है इसका बता दें जल्दी से. टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. Yes, sir. Yes, sir. मोबाइल पर आप हैं या लैपटॉप पर कर रही हैं? Sir, mobile. जो सामने स्लाइड आ रही है इसका बताएं जल्दी से. Yes, sir. The period marks the British King's restoration to the throne after a long period of pertain domination in England. Its symptoms include the dominance of the French and the classical influence of the poetry and drama. Restoration literature continued to the appeal to the heroic ideals of love and honor, practically and staged in heroic tragedy.
इतनी सारी गलतियां रीडिंग की आपने कर दी। हॉरिक के लिए हीरोइक है ये, पिरिटन Yes. हीरोइक। Yes, Okay, sir. Yes. name please. What is your name? Shaista. Sir, Shais. Shaista. Shais. Okay, thank you very much. Thank you. Any other student left? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Name. I am Kinza Humayun. Where is your presentation? Sir, अभी भेजिए जल्दी से. We have no time. Send me your presentation right now. सर नहीं जा रही, नहीं तो मसला हो रहा है। Sunil Kumar present or not? सर डेटा पे नहीं जा रही, पता नहीं। देखिए आप. Yes, Mr. Sunil Kumar. Yes, Mr. Sunil Kumar, start. We have no time. Yes, Mr. Sunil Kumar, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं. स्टार्ट करते हैं आप जल्दी से. यस सर. स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें यार. 7 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा. आप ऐसे ही अपना वक्त भी ज़ाया करें, मेरा भी. स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. यस. नीरज कुमार present. Yes, sir. Have you given your presentation? Yes, sir. I would like to give my presentation. Have you Sir, kindly given? play it. Have you given or you are giving? Sir, I have already take you. Oh, sorry, sir. I have already gave you my presentation. Send you on the WhatsApp. Kindly open it. Start. Start, please. Hello, Assalamualaikum. Today I'm going to present my presentation. I have topic importance of the politics. एक बात. Hello, sir. Can you Yeah. listen me, sir, properly? या पहले मुझे एक बात बताएं कि आपका और Hello, sir. first tell me one thing. Your presentation. Can you listen me, sir? I can listen to you, but tell me about your presentation. आपकी presentation और जो अभी आपसे पहले Yes, sir. सुनील कुमार, दोनों ने एक ही presentation दी है क्या? आपकी presentation और सुनील कुमार दोनों की एक ही presentation है? Answer to my question. Yes. Mr. Neeraj Kumar, you tell me your presentation and Sunil Kumar, both are same. Sir, Neeraj is not here. Okay. It means any other student? Yes. सर मैं आपको भेज रही हूँ पर नहीं जा रही, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। देख लें. मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं, स्क्रीनशॉट्स क्या मुझे व्हाट्सएप कर दें. वो भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या नेट का मसला आ रहा है। तो आप मुझसे बात तो कर रही हैं, इस वक्त आवाज़ क्लियर आ रही है, फिर ये भी आ जाए. मैंने व्हाट्सएप की है आपको, मैं
Any other इनको भी किए जी आवाज भी सही है any other student? Yes, please. इनके अलावा और कोई स्टूडेंट? We have only 4 minutes. सिर्फ 4 मिनट है हमारे पास. Yes, please. If there are any other students. Yes, sir. Suryakant. Suryakant, where is your presentation? सर मैंने आपको सेंड की सर व्हाट्सएप पे. कब भेजी है? सर मैंने कल भेजी थी. अभी दोबारा भेजो. जल्दी से भेजो, टाइम नहीं हमारे पास. ओके सर. We are running out of time, my dear. Send me your presentation. सर 1 सेकंड. सिर्फ भेज देना उसको, आप उसको सिर्फ व्हाट्सएप कर दें बस. तो व्हाट्सएप कर रहा हूँ. हाँ जल्दी कर दें, हमारे पास टाइम नहीं, 3 मिनट है बस हमारे पास. जी सर. नाश्ता थोड़ा नेटवर्क एरर है ना, गांव में रहते हैं ना, इसके लिए थोड़ा मसला हो रहा है. सर भेज दी. हेलो सर. ओके, क्या नाम है आपका? सूर्यकांत. आई एम प्लेइंग यू वन, यू आर द लास्ट. जी सर. हियर वी गो. स्टार्ट प्लीज. स्टार्ट करें. थोड़े ओपन एरिया में चले जाए, स्टार्ट कर दे. सर मेरी ले ले, मेरी आपको आ गई होगी अब. आवाज नहीं आ रही. ओके किंजा, आपकी प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ मैं. Yeah, start. Kinza, you start, please. Can you see? Yes, Kinza, start, please. Yes, Kinza, start. हेलो हेलो. सर शुरू कर दें, टाइम नहीं Can you हमारे hear? पास. हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन, स्टार्ट करें. Okay. This era have a lot of problems and troubles regarding literature. So that's why the poets and the writers come up to solve them. So this era is called the change